वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग numpy के फंक्शंस देखने वाले हैं। तो हम लोग इतने फंक्शन कवर करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम, मीन, मैक्स, मीन और एनडिम। एक्सिस का यूज़ देखेंगे, फिर एसटीडी और रैंडम नंबर किस तरीके से जनरेट करने हैं वो फंक्शन हम लोग देखेंगे। यूनिक देखेंगे, ट्रांसपोज, रीशेप और फ्लिप, फ्लैटन और ravel, और एट द एंड हम लोग देखेंगे व्यू, वेयर एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक numpy की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट numpy as np. Okay, now I will create one numpy array. X is equals to np dot. I'll create using a range, and range I will pass from 1 to 50. One to 21. Okay. Now if you want to perform a sum of this numpy array element, simply you can call x dot sum. It will give you sum. X dot mean will give you average. X dot max will give you maximum number. X dot mean will give you minimum number. और x dot ndim, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको जो numpy array है आपका उसका डायमेंशन रिटर्न करेगा। किसी भी numpy array के अगर फंक्शंस आपको देखने हैं तो आप dir के अंदर numpy का वेरिएबल पास कर दो, आपको उसके सारे फंक्शन मिलेंगे। और अगर आपको numpy लाइब्रेरी के ऊपर आप कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हो वो अगर देखना है तो आप dir के अंदर आपका अलाइस नेम दैट इज़ np पास करो, तो उसके आपको सारे फंक्शंस यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मिल जाएंगे। ओके, तो हमने अभी जो फंक्शन देखे वो सारे फंक्शन हमने numpy एरे के साथ यूज़ किए। अब इन्हीं फंक्शन को हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर यूज़ करके देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं रीशेप करता हूँ विद मैट्रिक्स 4x5. ओके, spelling is wrong, so reshape, RESHAPE. ओके, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर क्रिएट हो गया विथ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। अगर आप x डॉट ndim करोगे तो इस बार ये आपको 2 रिटर्न करेगा बिकॉज इट इज़ 2 डायमेंशनल एरे। Now again I will call x dot sum, so this time it will give you addition of all numbers. तो ऊपर के सारे फंक्शन आप इस एरे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी दैट इज एक्सिस। So if you write x dot sum axis is equals to 0, तो ये आपको जो है ये कॉलम वाइज सबकी एडिशन देगा। जैसे फर्स्ट कॉलम की एडिशन आ रही है 34 एंड सेकेंड कॉलम की एडिशन 38 एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर आपने लिखा एक्स डॉट सम एक्सेस इक्वल्स टू 1 तो ये आपको रो वाइज एडिशन दे देगा। So 15 is the addition of this first row, 40 is the addition of this second row and so on. Okay, तो ये था एक्सिस का यूज। नेक्स्ट हम देखेंगे std फंक्शन। तो दोबारा से मैं एक एरे यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। So x is equals to np dot array and I'll create array with some random numbers 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so I have created one array with 15 numbers, and if you call std, it will give you standard deviation. Okay, तो ये इस पर्टिकुलर डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने निकाला। अब अगर आपको रैंडम नंबर से एरे जनरेट करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू जनरेट वन एरे दैट इज z, तो उसके लिए आपको numpy की रैंडम मेथड मिलेगी जो कि रैंडम क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, np डॉट रैंडम डॉट random, and I want 5 random numbers, so you can use it like this. So it will give you 5 random numbers. Okay. Next हम लोग देखेंगे unique. So we have an array that is x, and if I write result is equals to x dot np dot unique, this particular method you can call using np. पहला जो पैरामीटर है आपको एरे पास करना है, सो माय एरे इज x and we'll see what it returns. So in result it will give you all unique numbers only. Okay, so in this array there are some duplicate values also there, but इसने यहाँ पर सिर्फ यूनिक, उसमें से जो यूनिक है वो रिटर्न किया है। अब और भी पैरामीटर हम लोग इसके यूज करके देखेंगे, दैट इज np डॉट यूनिक. First parameter is array and second parameter is return underscore index. तो जो यूनिक वैल्यूज रिटर्न हो रहे हैं, अगर उसका इंडेक्स भी आपको रिटर्न करना है, so you can write return underscore index is equals to true. So in result this will give you two arrays. The first array is value and second is its index. Okay, तो ये 5 जो है ये इंडेक्स नंबर 8 पर प्रेजेंट है हमारे एरे के अंदर, और उसी तरीके से 6 जो है वो इंडेक्स नंबर 9 पर प्रेजेंट है, एंड सो ऑन. ओके, नाउ विल राइट वन मोर थिंग. सो रिजल्ट इज इक्वल्स टू np डॉट यूनिक. फर्स्ट पैरामीटर इज योर एरे, सेकेंड पैरामीटर इज रिटर्न underscore index, and there is पैरामीटर दैट इज रिटर्न अंडरस्कोर काउंट. अगर आपको काउंट चाहिए तो आप रिटर्न अंडरस्कोर काउंट ट्रू कर दो, तो कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उस लिस्ट के अंदर इवन यू कैन गेट इट. ओके, सो रिजल्ट इज इक्वल्स टू np डॉट यूनिक, array is x, and I will write return underscore counts. Okay, return underscore counts is equals to true. Okay, so when you see result, it will even give you count. Okay, so number 5 has appeared 3 times. So second array it is the count array, first array is unique elements. Okay, so 41 has arrived only one time, so you can see only one time. So this is the unique function that you can use. Next is transpose, reshape and flip. reshape हमने already देखा है. array का dimension अगर change करना है आप लोग reshape यूज कर सकते हैं. transpose अगर हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है, जैसे यहाँ पर एक हमने बनाया था मल्टी डायमेंशनल एरे विथ साइज 4x5, दोबारा से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर. और अगर आपको इंस्टेड ऑफ 4x5 सपोज यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू 2x10, so you can simply write x dot y is equals to x dot reshape and 2x10. While reshaping your 2D array, it must you must have to take precaution that all the elements should
ऑक्यूपाई दिस डायमेंशन। जैसे 20 एलिमेंट है 4/5 में हो जाता है, तो इसीलिए 2/10 मीन्स 20, so 20 elements can occupy this shape and perfectly 2 rows and 20 columns it has reshaped. Okay, transpose will transpose this. So if you write z is equals to y dot transpose, so all rows will convert into columns and all columns will convert into rows. So this is what transpose operation. When you see z, it will be like this. Okay, and flip will flip the array. So we have an array that is, I'll take array. Okay, I'll reshape this into z dot reshape 20. I'll reshape into one dimensional array, and when you flip this, I'll take any variable. You can take r is equals to z dot flip. तो ये कंप्लीट एरे फ्लिप हो जाएगा, मतलब जो लास्ट है वो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट जो है वो लास्ट आ जाएगा. ओके, सो इट्स फ्लिप यू हैव टू कॉल np dot flip. Okay, you have to call it using np, and you have to write your array that is z. Okay, so you can see that it is flipped. So the last element is first and first element. Even 2D array we can flip it. अगले इम्पोर्टेंट फंक्शन है फ्लैटन और ravel. तो फ्लैटन फंक्शन का जो यूज़ है, अगर आपको 2D array को 1D में कन्वर्ट करना है, you can use flatten. So we have this 2D array, and when you write z dot flatten, and if you assign this to say a is equals to z dot flatten, so this entire array will convert into 1D array. Okay, and similarly ravel will do b is equals to z dot ravel. तो यहाँ पर भी आपको जो है वो 2D array 1D array में कन्वर्ट करके मिलेगा. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फ्लैटन फंक्शन जब भी 2 डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा तो उसकी कॉपी वो ए के अंदर डालेगा, बट यहाँ पर जो है ravel फंक्शन उसका रेफरेंस डालेगा. मतलब अगर मैं ए के अंदर कुछ चेंजेस करूँ, फॉर एग्जांपल ए ऑफ 0 में अगर मैं डाल दूँ 55, और अगर मैं z को प्रिंट करूँ तो z के फर्स्ट इंडेक्स पे जो है that is only 1. Okay, that is not modified. बट यही काम अगर मैं b में करूँ तो b ऑफ 0 में अगर मैं डाल दूँ 22, और अगर मैं z को प्रिंट करूँ, so you can see that. Okay, just for understanding, let me just make it simple. One more time, I'll create one array that is x is equals to np dot array, and say we have array 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, I'm taking this because I want to make it simple. And see, if you okay, this is the okay, I'll first create it into 2D array. Okay, so a is equals to np dot a range, और मैं एक रेंज पास करता हूँ 1 to 13, और इसको मैं रीशेप कर देता हूँ, रीशेप इनटू 3/4, तो मेरा 2D एरे यहाँ पर बन जाएगा. तो अभी ये जो 2D एरे है इसको अगर आपको 1D एरे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिख सकते हो, a डॉट फ्लैटन. ओके, a डॉट फ्लैटन. तो
ये बी आपका 1D एरे हो गया। सिमिलरली आप यूज कर सकते हो ए डॉट रैवल, तो ये भी आपका यहाँ पे एक 1D एरे बन गया। अब मैं बी ऑफ 0 में अगर कुछ चेंजेस करूँ, से बी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 22, and if I print a, it will not affect on this, okay, but uh, if I do some changes on, so if you do some changes on b of 0 0, okay, b of 0 0 is equals to 22. See, it is okay, it is 1D array, and in this 1D array, okay, so we'll move to next, that is view, where and foo. Okay, तो व्यू फंक्शन जो है वो आपको जैसे मेरे पास यहाँ पर एक एरे है दैट इज बी, एंड इफ आई राइट से आर इज इक्वल्स टू बी डॉट व्यू, तो ये आपको जो है ये एक रेफरेंस क्रिएट करके देगा। ओके, सो इफ यू राइट से आर ऑफ 0 is equals to 100, and if you print b, so see, we have modified r, but reflection is in b, तो ये आपको एक रेफरेंस क्रिएट करके देगा। व्यू विल क्रिएट द रेफरेंस, ओके, एंड नेक्स्ट वेयर, अगर एरे के अंदर से आपको बेस्ड ऑन कंडीशन अगर कुछ स्लाइसिंग करना है, यू कैन यूज वेयर। सो आई विल शो यू, सपोज वी हैव अ लिस्ट, वी हैव अ एरे a is equals to np dot a range, and we are passing range from 1 to 21, and suppose I want only the number greater than 5 and less than 15, so you can simply write a dot where, इसके अंदर आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी a less than 5 and a greater than 15. Okay, so this condition you have to write in bracket, so a less than 5 and a greater than 15. Okay, first of all I will check a dot where a greater than 5, so what is a is our 1D array, and when I'm writing where, so okay, if you want to check help or definition of any function, you can simply write uh, help function. Okay, so help a dot where, so it should give you okay, help np dot where, and okay, so it is np dot where, and it requires array of function dispatcher condition, and it's something like this. Okay, so we have to use np instead of a, so you can write np dot where a greater than 5. Okay, so it will give you all the elements which are greater than 5, and when you write np dot where a greater than 5 and a less than 15,
So it will give you all the elements which are greater than 5 and less than 15. Multiple conditions you have to put in separate brackets, so it will work fine. Okay, so this was the where function, and last we will see who. So who will give you all the variables which are created. तो अभी इस आइडियली शैली में अभी तक हमने इतने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है सिंपली हु फंक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शन numpy के प्रेजेंट हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट देखनी है तो ये वो फंक्शन है जो आप कॉल कर सकते हो यूजिंग वेरिएबल np मीन्स दिस, और x जो कि हमारा numpy एरे है उसके फंक्शन, ये सारे फंक्शन उसके हैं जो कि आप यूजिंग x या फिर आपका numpy एरे वेरिएबल क्रिएट करके उसके ऊपर इनको कॉल कर सकते हो। ओके, और numpy के सभी फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। गूगल में आपने सिंपली टाइप करना है numpy डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इन डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। So thanks for watching this video till the end. We'll meet you in next video.